बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द माइंड ड्रेनेज। सो हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ जिसका ख़त्म हुआ था। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि पंप कर्व्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पंप कर्व्स बनती कैसे हैं। उसकी वजह यह है कि एज अ माइनिंग इंजीनियर जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट पता होती है। हमें ये पता होता है कि माइन में किस रफ्तार से पानी आ रहा है और किस रफ्तार से हमने बाहर भेजना है। यानी हमें ये ज़रूर पता होता है कि जो हमें कितना फ्लो चाहिए। दूसरी चीज़ हमें पता होती है, हमें अपनी माइन की डेप्थ या जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है वहाँ डेप्थ पता होती है और उसको हमें सरफेस तक जो लेके जाना है वो हाइट हमें पता होती है। ये दो चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं और इन्हीं की बेस पे हमने पंप सेलेक्ट करना होता है। अब होता ही है कि जब हम पंप सेलेक्ट करने चाहते हैं तो मुख्तलिफ कंपनीज जो पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो पंप कर्व्स उनके पास जो पंप्स होते हैं दैट्स बेसिकली पंप कर्व्स होती हैं। तो ये हमारा काम है कि हम उन पंप्स कर्व्स को देखते हुए अपना पंप सेलेक्ट करें। हर पंप की एक कर्व होती है जो उसकी एफिशिएंसी, उसकी ब्रेक हॉर्स पावर, उसकी डिफरेंट उसको। तो ये पता चला ना कि ये पंप कर्व्स बनती कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जब वो पंप कर्व्स हमें मैन्युफैक्चरर दिखाए तो हम समझ सकें कि ये पंप कैसे काम करता है और क्या हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। तो इस वीडियो को चला के मैं आई विल नॉट स्पीक बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो। लेट्स सी। Hey there guys, Paul here from the engineeringmindset.com. In this video, we're going to be looking at pump curves to learn how to read them and what the different lines mean. After you've learned about pump curves and the part they play in pump selection, visit today's sponsor, statesupply.com, to find the right pump for your curve requirements, shop for parts, or speak to a knowledgeable pump expert on top brands like Bell & Gossett, Taco, and more. Just click the link in the video description below to find out more. The basic pump curve looks like this, but they do get more complicated and look something like this. Don't worry, we're going to go through them step by step and start from the basics. Each type of pump has a different chart, and the data plotted on them also varies with the model. The first thing we notice is that on the main vertical y-axis we have the head pressure, and on the vertical x-axis we have the flow rate. Basically speaking, the head is pressure and the flow rate is how much water the pump can move. So what do these charts represent? If we turn the pump sideways and connected it to a pipe, the pump is pushing the liquid horizontally, so there is no pressure, but the water is flowing at its maximum flow rate. As we slowly rotate the pump towards the vertical position, we see the flow rate decreases, but the pressure increases. That's because it's now pushing against the water and the friction. As we get all the way to the vertical position, there is zero water flowing out of the pump, but maximum pressure. And that's because it's using all its energy to push against the water and hold it as high as it possibly can within the pipe. At this point, it's just spinning the same bit of water, which isn't good for the pump, so you don't want to run a pump like this in the real world. By recording the values during the elevation, we basically get our pump curve, although I will note that pump manufacturers don't test pumps this way because it's just not practical. If you want to know how a centrifugal pump works, then we have covered this in detail in our previous video. Do check that out, links down below. Head is shown on the vertical axis, and this is referring to pressure, so we often hear the term head pressure. We measure head in feet or meters, which doesn't seem correct considering we're talking about pressure, especially as you see the pressure gauges on the pump typically reading PSI or bar. The reason for feet or meters is that pump manufacturers only know how high their pump can push a liquid. They do not know which liquid your system will be pumping, and as each liquid has different properties, the pressure will vary depending on the liquid used. However, the height it can be moved by the pump will remain the same. For example, we have this pump which can provide 125 feet of head. If we use it to pump water, the pressure will be around 54.25 psi. But if we were to use it to pump milk, then the pressure will be around 56.15 psi. And that's purely because of the properties of the two fluids. Conversion between feet and meters of head is very easy. We have a free calculator for that, which you can find links to in the video description below. Why do we need to know head pressure? Pumps are usually used to move liquid to a higher region, so we need to ensure the pump can reach this elevation. As we pump liquid through the pipes and the fittings, friction will try to oppose the flow. This occurs from the walls of the pipe, but also disturbances to the flow path.
This causes pressure losses which waste energy from the pump. The amount of friction depends on the liquid type as well as the materials and fittings used. Therefore, we must calculate how much friction or pressure loss our system will generate and ensure that the pump we select can overcome this. Otherwise, we're not going to get any liquid out the upper end. When we look at the pump charts, we'll find pumps ranging in head and flow rate. For example, when we look at a small domestic heating system, there are a few fittings and short pipes. Therefore, we would use a pump with a relatively low head pressure. But if we were to look at a commercial heating system with multiple air handling units, fan coils, and long pipe lengths, then we know the pressure drop will be much higher, so we would need a pump that can provide much more head pressure. The flow rate is a measurement of how much liquid is flowing from the pump in a given amount of time. This measurement comes in many different units, for example, gallons per minute, liters per second, or cubic meters per hour. For example, a system might be designed to move 2 liters of water per second from a holding tank to a process tank. Performance curve. This is sometimes referred to as the HQ curve. H meaning head and Q which represents flow rate. The manufacturer will test each pump to obtain the performance data and then plot this on the graph. This will represent all the possible configurations between flow rate and head pressure, and we use this to check whether a pump will suit our requirements. The performance curve will be different for each pump, and some will suit our system needs better than others. You will usually see that as the pump flow rate increases, the head pressure decreases. When selecting a circulating pump, the pump will only perform as per the line. So, for this model, if we wanted 8 gallons per minute, then we would have 6 foot of head. You can also get multi-speed circulating pumps, which we'll look at later on in this video. When selecting a larger centrifugal pump, as long as our system requirements are on or below the performance line, then the pump can be considered. We can potentially use a smaller impeller or variable frequency drive to better suit the requirements. And again, we're going to look at that a little later in this video. For example, the performance curve of 2 large centrifugal pumps are plotted here. We need a flow rate of 30 gallons per minute and a head pressure of 70 feet. That means that pump 2 can't be used, but pump 1 could be. Impeller size. With centrifugal pumps, we can often change the size of the impeller. The diameter of the impeller will change how much water can be moved. So on some charts, you'll see multiple performance curves, which will give us the performance details of the pump for different diameter impellers. For example, 30 gallons per minute for a 4.5-inch impeller gives us around 13 feet of head. But if we use a 5.5-inch impeller, then we would get around 22.5 feet of head. In some instances, our required flow rate and head pressure might fall between the 2 impeller diameter lines. In such cases, we can often machine the impeller down to the required size to get a better match. You should ask your pump manufacturer or pump specialist to carry out this service though. The performance of the pump will then need to be calculated. I'll leave some links in the video description below for work examples for that. Pump power. As we know, pumps require mechanical power to spin the shaft, rotor, and ultimately move the water. Pump manufacturers will usually provide a chart which plots the power requirement. In imperial units, we use brake horsepower, and in the metric system, we use kilowatts. With this chart, we see the brake horsepower plotted at various intervals. As you can see, as the flow rate increases, so does the power requirement. We use this chart to size our motor. For example, if we needed 125 gallons per minute with 18 feet of head, then this is between the 0.75 and the 1 horsepower lines. As this point is above the 0.75 line, this means we can't use a motor of this rating because it will not be able to cope. Therefore, we'll have to use a 1 brake horsepower motor, and we see the performance curve falls completely under this line. So if our head pressure calculation is wrong, then we do have some safety margin. If you want to convert between brake horsepower and kilowatts, then check out our free calculator, links down below for that. Efficiency. Some charts will display the efficiency curve of the pump. This is measured in percent. You'll usually see this curved line where the pump increases up to its maximum efficiency and then it starts to decline again. Charts that display different impeller sizes will usually have efficiency displayed in these more complex plot lines. Each line displays the percentage of efficiency. In both charts, you can see that the efficiency varies depending on how you operate the pump.
In multiple impeller size charts, we see that the efficiency decreases as the impeller size also decreases. And that's because the gap between the impeller and the pump casing increases. And that will allow water to recirculate in this region and therefore waste energy. The efficiency is the ratio or comparison between the amount of energy going into the pump versus the amount of energy we get out of the pump. So ideally, we want this to be as close as possible to the peak for optimal performance. The pump will always lose some power when it converts and transmits this electrical energy into mechanical energy. This will be lost through the couplings, the bearings, the shaft, the seals, the cooling fan, etc. For example, on this chart, we can see that if the pump provided 125 gallons per minute at 25 feet of head, then it would run at around 67% efficiency, which isn't very good. If the same pump operated at 30 feet of head for 138 gallons per minute, then it would operate at its peak performance of 73%, which is much better. NPSH. This is the required NPSH, or net positive suction head pressure. This usually has an upward curve, which means as the pump flow rate increases, we see the NPSH value also increases. We measure this in meters or feet, sometimes kilopascals. The NPSH is the minimum pressure that must be available at the suction inlet of the pump to overcome the entrant losses and avoid cavitation. The available pressure at the inlet must therefore be greater than this value. Pump cavitation is where the pressure at the inlet of the pump reaches a low enough point that the water begins to boil. This creates rapidly expanding and collapsing air bubbles, which will gradually destroy the surface of the pump and the casing. For this example, if we were to move 150 gallons per minute, then we would require an NPSH value of around 4.9 feet. Multi-speed pumps. Some pumps, such as this one, operate at a fixed speed and therefore have a fixed performance curve. But we can also get multi-speed versions which have the ability to switch between speed settings. Typically, these come with 3 different speeds: low, medium, and high. These pumps will therefore have a chart with 3 different profiles plotted on them. We can operate the pump at any of these curves, but not between them. So, for this example, if we wanted 6 gallons per minute, or 0.3 litres per second, then on setting 1, we would get around 4.2 feet of head. On setting 2, we would get 8 feet, and on setting 3, we would get around 9.8 feet. Variable speed or variable frequency drives. Another option we have is to use a variable frequency, or otherwise known as a variable speed drive. This basically takes the electrical supply and alters it to reduce the voltage and frequency, which therefore alters the power of the motor and the speed of the pump. We can increase or decrease the speed via the controller to better improve our pump match and therefore operate nearly anywhere in the region below the curve. These are only really used on larger pumps, typically over 2 kilowatts in size. They do come pre-installed with new pump motors, or you can also retrofit existing pumps. You should check with the manufacturer first to ensure compatibility. Additionally, you must check the system design to ensure it can handle a lower flow rate and head pressure. To obtain the performance details for variable speed pumps, we have to calculate the values using the pump affinity laws. We've covered this previously in worked examples, links down below for that. Rotational speed. Some pump manufacturers will provide separate charts for operating the pump at different rotational speeds. We can then compare the performance to get a close match and then find an electrical motor which will suit our needs. Typically speaking, higher rotational speeds lead to more service and maintenance, so where possible, it's good practice to choose a lower speed pump that meets our system requirements. Voltage and frequency. Do check the specifications of the electrical motor. The voltage and frequency for mains electricity vary around the world, so we want to ensure that the pump you select will operate where you are installing it. Additionally, pumps come in single as well as in 3-phase designs, depending on the application. These details will be provided by the manufacturer and usually come on the chart or a technical document. Okay guys, that's it. This was one of the best videos जो मुझे मिली pump curves कैसे बनती हैं and what are the basics. I hope after watching this you have a very clear idea कि pump curves क्या होती हैं. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और कर्व्स को रीड कैसे करते हैं, हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं. वो वीडियो बट आई विल जस्ट पास इट. सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम. हमारे पास है, लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी.
से हमारे पास एक सम्प है माइन के अंदर जिसमें से हमें पानी को बाहर भेजना है ऑन दी this is the point where we have to take it. तो जो आपकी जो हाइट है you call it suction head the height which we have it is 24 feet 25 feet 4 इंच का पाइप है और sorry it's 10 feet the suction head देन उसके बाद आपको उसको जो ऊपर लेके जाना है उसका जो डिस्चार्ज है दैट्स 300 फीट यू कैन सी टोटल इसके अंदर और 150 गैलन पर मिनट हमें चाहिए इसके अंदर से चाहिए सो ये हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं अच्छा यहाँ पे जो पाइपिंग की लेंथ है वो आप देख लें ये जो आपका पाइप है दैट्स बेसिकली 500 फीट 3 इंच का पाइप है ये इसी तरह इस यहाँ पे फिर एक एल्बो है ये आप देखें ये एल्बो है और इस एल्बो के बाद दोबारा से एक, एक दूसरा पाइप है ये दिस शुड बी लाइक 300 फीट उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि एक एल्बो है पाइप मुड़ता है और अगेन जो है another pipe 500 feet तो इस तरह से और यहाँ पे फिर आपका पानी डिस्चार्ज हुआ है so that's how it's going on so हम इस 150 गैलन पर मिनट पर करना है हमें सारी हाइट्स पता है हमें हमें अपना देखना है कि हमें किस किस्म का पंप चाहिए सो दैट्स बेसिकली ये हमारी माइन है जिसमें से ये पाइप हमने गुजार के हम बाहर लेके जा रहे हैं सो हमारे पास एक पूरी सिचुएशन है हमें स्टैटिक हेड पता है हमें सारी चीज़ें पता है हमें गैलन पर मिनट कितना चाहिए तो उसकी बेस के ऊपर हमें किस किस्म का पंप चाहिए लेट्स कैलकुलेट दैट जस्ट फॉर द रेफरेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा गिवन है कोई देखना है सबसे पहली चीज वाज फ्लो है दैट्स 150 गैलन पर मिनट नेक्स्ट है स्टैटिक लिफ्ट बात हो चुकी है 10 फीट है इतना पंप को उठाना है फ्रॉम हियर यहाँ से लेकर ये पंप को उठाना होगा उसके बाद शॉक लॉसेस जो एल्बोज के अंदर हैं हमें देखना होगा कि एल्बोज हैं इसकी एक ही एल्बो है अगर आप इस हम सेक्शन साइड की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सेक्शन साइड है एक ही एल्बो है और एक एल्बो की जो रेजिस्टेंस है वो इतनी है जितनी 11 फुट पाइप की होती है so you just 1 into 11 तो 11 फीट हो गई तो टोटल इक्विवेलेंट लेंथ हो गई देखें ये जो पाइप था ये 25 फीट है यहाँ से पानी ऊपर आ रहा है 25 फीट प्लस 11 फीट जो एल्बो के अंदर लॉस होना है उसको वो समझ नहीं ऐसे ही है जैसे 11 फुट का एक मजीद पाइप है तो टोटल 36 फीट आपको सक करना है लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और हेड है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं कि पाइप इसके अंदर फ्रिक्शन भी होगी तो फॉर कैलकुलेटिंग दैट हमारे पास हमें पता है हम ना उस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि 100 फीट अगर ये पाइप होता तो इसके अंदर 2.65 फ्रिक्शन हेड होता तो हमारा क्योंकि 36 फीट का पाइप है तो उसके लिए इतना लॉस होगा अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें ये कैसे पता चला कि अगर ये 100 फीट का पाइप होता तो इसके अंदर 2.65 फीट फ्रिक्शन हेड लॉस होता उसके लिए मैं आपको वापस लेके चलना चाहूँगा basically आते हैं let me go it is basically this
बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने फ्रिक्शन लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा था। वो फार्मूला ये था HF = 0.2083 क्यू ओवर डी। हमें क्यू पता है 150 है और डी भी हमें पता है, जो डायमीटर है वो अराउंड आई थिंक 4 इंच। जब हम उसकी वैल्यू डालते हैं तो ये 2.65 आता है। फ्रिक्शन है 2.65 फीट। तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरह का जो पाइप है जिसमें इतना फ्लो और उसका जो इतना इंच हो, तो अगर वो 100 फीट का पाइप होता उसमें इतना फ्रिक्शन लॉस होता। तो हमारा क्योंकि 36 फीट है तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं 2.65 इंटू 36/50 हम कर लेते हैं। Let me go to Centrifugal. slide. Okay, G, it was a long thing to come to this slide. So, what I wanted to tell you was about this. 65 कैसे आया, तो हमने इसको 36 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 किया है। सो ये जो फ्रिक्शन हेड लॉस है दैट्स 0.95 फीट। इसका मतलब ये है कि पंप को टोटल सक्शन वाली साइड पे, इस साइड पे has to deal with 11 plus 36 and plus 0.9, sorry, uh, it will be 10.9। टोटल एक तो स्टैटिक लिफ्ट है जो इसको करनी पड़ेगी, विच इज 10 फीट। वो तो हाइट है ही है जिस पे इसको लेके जाना है। और बाकी ये जो एल्बो है इसकी वजह से, और ये जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से आप समझ लें कि वो 0.95 फीट की और भी मेहनत करनी पड़ेगी। So that's why it becomes 10.95 feet. This is the head required at the suction side. इतनी लेंथ पे पंप को काम करना है, क्योंकि हम फ्रिक्शन को और इसकी जितनी रुकावट है उसको फीट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह डिस्चार्ज साइड पे अगर आप आए तो आप देखेंगे कि जो स्टैटिक लिफ्ट है जो हमें इसको ऊपर लेके जाना है 300 फीट, लेकिन ऐसा नहीं है बीच में पाइप क्योंकि सीधा नहीं जा रहा है, इट्स गोइंग लाइक दिस एंड इट हैज, जो फ्रिक्शन भी हमें काउंट करनी है प्लस एल्बोज। ये जो है एक एल्बो, दो एल्बो, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तीसरी एल्बो, तो तीन एल्बोज को भी हमने कवर करना है। सो शॉक लॉसेस जो एल्बो के अंदर हैं वो एक एक एल्बो को हम 11 फीट कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम द टेबल। सो 3 से मल्टीप्लाई करें 33 फीट ये बन जाता है। प्लस जो आपका जो पाइप है, सॉरी मैं पीछे थोड़ा सा आई थिंक आई वाज मिस्टेकन, यस, ये टोटल जो पाइप की लेंथ है दिस इज 500 फीट, प्लीज pardon for the mistake, that's the total length is 500। सो 500 फीट ये इस पाइप में से गुजरना प्लस 33 फीट हम ऐड कर रहे हैं ऑफ दी जो एल्बो के अंदर लॉसेस होने हैं, तो इस टोटल 533 फीट। सो जो फ्रिक्शन लॉस होगा ये 10.65 बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2.65 है, अगेन फ्रॉम द फ्रिक्शन हेड लॉस फार्मूला। तो 50 533 फीट विल बी लाइक 56.5 फीट। सो 56.5 फुट की मजीद मेहनत करनी, 300 फुट तो उसको लेकर जाना है, उसके अलावा भी आप 56.5 फुट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पाइप एक तो इस तरह से जा रहा है और दूसरा जो एल्बोज हैं उनके वजह से लॉसेज हो रहे हैं। सो वी विल टेक इट नॉट 300 फीट बट 300 प्लस 56.5 फीट। So this will become 355.5
54 या 356.5 feet आप कह लें becomes so this is discharge side यानी अगर हम इसको जैसे कहते हैं ना लेंथ को वैसे तो फ्रेंड ये 10 फीट थी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकिन जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से 10.95 हो गई इसी तरह यहाँ से लेकर पंप को डिस्चार्ज जो करना था वो तो 300 फीट है बट फ्रिक्शन लॉसेस एंड कंसीडरिंग ऑल द शॉक लॉसेस it's not 300 feet but 356 or 355 feet तो जो हमारे पंप को काम करना है इस पंप को टोटल फीट्स जो इसको डिस्प्लेस करने हैं टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फीट को इन दोनों सेक्शन और इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल जो हेड बनता है बाय एडिंग 350 दिस 356.5 10.95 it becomes like 367 and 368 feet so it's like total head जो हमें इस टाइम इस पंप को जो that is 367 and 368 feet so that's why हम इसमें फ्रिक्शन हर चीज़ हम कंसिडर कर चुके हैं पाइप की डायरेक्ट जो डायरेक्ट नहीं जा रहा उसका अब जो ब्रेक हाउस पावर चाहिए यानी हमें इस पंप जो पंप चाहिए जिसकी ब्रेक हाउस पावर क्या है वो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है QH/3960E इस हवाले से इसके अंदर अगर हम पुट करें वैल्यूज हमें Q की वैल्यू पता है विच इज 150 हमें गैलन पर मिनट चाहिए हेड हमारे पास है जो उस पंप को करना है यानी 367.45 पंप की एफिशिएंसी भी हमें कंसिडर यहाँ करनी पड़ेगी तो वो कितनी है अगर ये तीन चीज़ हमारे पास हों तो एक माइन जब आपके पास आए तो अब आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं माइन के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको अंडरग्राउंड से कितना ऊपर लेकर जाना है और कितना आपको फ्लो चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ब्रेक हॉर्स पावर कितनी ब्रेक हॉर्स पावर का आपको पंप चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो देख लें कि हमने वैल्यू पुट की 150 और Q that is 366 और ये बार बार वो डिफरेंट लिखा जा रहा है it's the same thing it's the same this thing it's the same 3960 और हमने यहाँ पे जो पंप की जो एफिशिएंसी कैलकुलेट किया है 70% तो having put in all these terms जो हमें ब्रेक हॉर्स पावर जितनी 119.88 ब्रेक हॉर्स पावर का पंप चाहिए अब देखें हमारे पास एक वैल्यू आ गई है जो हमने पंप खरीदना है आई होप कि ये एग्जांपल आपको हेल्प करेगी इन योर practical when you are on the mine and you are calculating कि आपको कितने brake horsepower का पंप चाहिए so you can calculate the brake horsepower by using this formula तो इससे आप थोड़ी ज़्यादा वाला लेंगे go for 25 or depending upon your conditions खैर बट एक्चुअली इन एक्चुअल ये हमें ब्रेक हॉर्स पावर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये वो कैलकुलेशंस वगैरह हैं जो पंप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमें पंप कर्व्स प्रोवाइड कर देते हैं जो पहले से हुई होती हैं सो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है तो हमारा मेन काम एज अ माइनिंग इंजीनियर व्हेन वी आर इन द फील्ड लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बैक एंड पे हो क्या रहा है सो दैट्स व्हाट इट इज़ सो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो हमें जो जो पंप जो हमें पंप चाहिए वो हमें सेलेक्ट कैसे करना है तो इसके लिए एक छोटी सी मैंने एग्जांपल आपके लिए सेलेक्ट की है सो लेट्स गो थ्रू दैट जिसमें हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर की कर्व से हम अपना हम कैसे सेलेक्ट करते हैं अपना पंप सेलेक्ट कर सकते हैं सो लेट्स सी दैट सो हम अज्यूम करते हैं इसी एग्जांपल के अंदर कि हमारा जो इस दफ़ा जो रिक्वायर्ड है वो से वो 75 केलन पर मिनट है एवरीथिंग इज सेम स्टैटिक लिफ्ट उसी तरह 10 फीट है तो उससे हम शॉक लॉसेस निकाल सकते हैं एल्बोज के अंदर और सारा कुछ निकालने के बाद हमारे पास 10.95 फीट आ गया इसी तरह जो डिस्चार्ज था वो भी सेम है दोनों हेड्स को हमने जब इकट्ठा किया तो ये 367 बना तो ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कीपिंग इन योर माइंड अब ये है क्यों आपके पास हेड भी आ गया यानी जो मेन चीज़ है आपको कैलकुलेट करनी है माइंड पे वो आपको हेड टोटल कैलकुलेट करना है और आपको
आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना फ्लो पर मिनट चाहिए। वंस यू नो दीज टू थिंग्स, ये आपको माइन, क्योंकि देखें माइन के अंदर पाइप तो आपने बिछाना है, आपको पता है कि कितनी लेंथ है माइन की, उस हिसाब से कितनी उसके अंदर टर्न्स आएंगे पाइप, उस हिसाब से आप हेड कैलकुलेट कर लेंगे। और जो जिस रफ्तार से पानी आ रहा है उससे ज़्यादा रफ्तार से आपने निकालना है, या उस रफ्तार से, तो उस वो भी आपके पास है। तो आपके पास फ्लो पर मिनट भी है और हेड भी आपने निकाल लिया। अब आपने पंप सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप मैन्युफैक्चरर की साइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको पंप कर्व्स मिलेंगे। अब ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास है। जब आपको पंप, व्हेन यू विल गो टू द मैन्युफैक्चर साइट, आपको इस किस्म की पंप कर्व नजर आएगी। इसकी अगर आप, इट लुक्स स्केरी बट इट इज नॉट, दिस इज टोटल हेड फीट के अंदर, और ये वो है फ्लो जो आपको चाहिए। और हमें पता है कि हमें 75 फ्लो चाहिए, और जैसे भी आपसे डिस्कस हुआ था कि तकरीबन 367 हमारा हेड है जो हमें, तो उस हिसाब से हमने पंप सेलेक्ट करना है। अब ये जो आपको नज़र आ रही हैं कर्व्स, ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से पहले से ड्रॉन होती हैं। वो पंप के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस हिसाब से ड्रॉ करते हैं। ये बेसिकली जो आपको परसेंटेज वाली कर्व नज़र आ रही है, दैट्स बेसिकली द एफिशिएंसी, 35 एफिशिएंसी, 40%, 43%, दैट्स हाउ इट इज। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी वो है कि 10 इंच इम्पेलर। मैंने आपको इसीलिए जो भी वीडियो दिखाई है पंप की कर्व्स की, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास इम्पेलर डिफरेंट, ये वो पंप है जिसका इम्पेलर जिसके अंदर लगा हुआ है वो 10 इंच का है, लेकिन उस इम्पेलर को हम छोटा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जैसे ये 9.75 इंच का अगर हम इम्पेलर कर देते हैं तो उसके लिए ये कर्व हम पढ़ेंगे। 9.5 इंच का करते हैं तो ये इम्पेलर के डाया के ऊपर है बेसिकली, और ये 9 इंच वाले के लिए, ये 7 से लेकर ये कर्व्स हैं 9 इंच तक। उसके बाद आपको एक और कुछ और लाइनें नज़र आ रही होंगी, ये डॉटेड, ये बेसिकली हॉर्स पावर है। इसी पंप के अंदर हम डिफरेंट हॉर्स पावर्स कर सकते हैं, जैसा कि आप उस पिछली वीडियो में देख चुके हैं। सो ये दो तीन चीज़ें हैं जिनसे हमने अब पंप सेलेक्ट करना है। तो व्हाट वी विल डू इज कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको पुट करते हैं लेट्स से, और वो थी 75। उसके लिए ये मैंने पुट की है। अगर आप देखें ट्राइंगल जस्ट टू फिट इन, वो ये है कि क्योंकि हमारा 75 है और यहाँ से 367 है, तो एक रेक्टेंगल मैंने पुट किया जस्ट टू सेव टाइम। तो अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल इस जगह के ऊपर, ये वो पॉइंट है जहाँ पे 75 आपका क्या है, हेड है, सॉरी 75 गैलन पर मिनट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, और 367 हमारा हेड है। तो ये पॉइंट बनता है इसके ऊपर, इस पंप कर के ऊपर। ये एक पंप की जो कर हमें मैन्युफैक्चरर ने दी है, तो हमने देखना है कि हमने मैन्युफैक्चरर को बताना है कि हमें कितनी परसेंट का पंप, कौन सा पंप चाहिए, तो ये हमें सेलेक्ट करना है हमारे लिए कौन सा फीजिबल है। सो हम अपना डाटा प्लॉट किया हमने, जो कि फ्लो था और हेड था। तो वंस वी प्लॉटेड दैट, हमारे पास एक पॉइंट आ गया है। अगर आप इसको हम जैसे मैंने आपको बताया था कि 75 गैलन हमारी रिक्वायरमेंट थी और 367 था, तो अगर आप उसको प्लॉट करें तो ये बेसिकली ये तीर का जो अभी निशान एनिमेट होकर आया है, दैट्स बेसिकली ये वो पॉइंट। अब अगर आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को, तो इट सेज, तो इस अगर हम उसके सिलेक्शन की बात करें, तो जो पहली चीज हमें नजर आ रही है ये इस कर पे, यानी इस पंप की एफिशिएंसी 40% होगी। 40% एफिशिएंसी होगी, नंबर वन। नंबर टू, हमें देखना है कि हॉर्स पावर। अगर आप देखें तो इफ यू आर गोइंग फॉर द हॉर्स पावर, ये 20 हॉर्स पावर की लाइन है और ये 15 हॉर्स पावर की लाइन है, और जो हमारा पॉइंट है वो 15 से ऊपर है। हमारा ये पॉइंट 15 से ऊपर है, और ये देखें ना 15 से ऊपर है, 15 वाले से और 20 वाले से नीचे है, तो हमारे लिए 20 हॉर्स पावर वाला सूट करेगा। तो हमारा जो पंप है वो 20 हॉर्स पावर का होना चाहिए। और इसकी जो एफिशिएंसी होगी 40% होगी, वो भी हमें पता चल गई इस पंप कर्व से।
और जो तीसरी चीज़ है उसका इम्पेलर साइज क्या होना चाहिए, और वो आप देख सकते हैं 9.56 इंच होना चाहिए। सो अब हम मैन्युफैक्चरर को बता सकते हैं कि भाई आप जो 20 हॉर्स पावर का पंप लें, ये वाला जो है ये स्पेसिफिक पंप, और हम उससे बहस भी, और उसका इम्पेलर साइज 9.56 इंच होना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन हम उसे ये कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, तो हमें किसी और पंप की कर्व्स दिखा दो। तो बेसिकली यू नीड टू चेंज दिस पंप, क्योंकि 40% एफिशिएंसी which is not good enough। सो इस तरीके से आप किसी और पंप की कर्व्स देखेंगे, उस पर भी अपना आपने क्या करना है, फ्लो जो आपका रिक्वायर्ड है प्लस आपका जो हेड जो आपने कैलकुलेट किया माइन का जो आपका रिक्वायर्ड है, वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस तरीके से आप पंप कर्व से आप अपना जो पंप है वो सेलेक्ट कर सकेंगे, उसकी हॉर्स पावर और उसके इम्पेलर साइज। So this was a little example of how to select pump uh, based on your mind। और ये इम्पेलर्स की मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये डिफरेंट आप देख रहे हैं ना साइज के इंटरनेट पे, इस तरह इम्पेलर्स डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, आपके पंप के अंदर आप लगा सकते हो। तो वो भी आपने चूज करना होता है कि किस साइज का इम्पेलर लगे, ताकि आपकी फोर्स भी ज़्यादा ना हो और आपकी फ्लो भी आपको उतना मिले, आपकी एनर्जी भी कम कंज्यूम हो जो आपको रिक्वायर्ड। तो ये थोड़ा सा पंप कर्व्स के बारे में था। आई होप कि अब आप अपनी माइंड पे जाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना हेड चाहिए, और उस हिसाब से फिर आप पंप भी सिलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस ड्रिल। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि पंप्स होते किस टाइप के हैं। माइनिंग के अंदर दो टाइप के पंप्स हैं जो आपको माइंस पर मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट पंप्स हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वो कैसे काम करता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पंप्स कैसे काम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पंप्स आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होते हैं, बेसिकली ये रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैं, और these are their schematics। या आप रोक के इसको और से देख सकते हैं, वॉल्व बंद होता है, पिस्टन मूव करता है, फिर वॉल्व बंद होता है और खुलता है। हम इसकी एक वीडियो देखते हैं जिससे आपको काफी अंदाजा हो जाएगा कि हाउ डिस्प्लेसमेंट जो पंप्स हैं वो कैसे काम करते हैं। Hi friends, in this video we cover what is reciprocating pumps. Typical reciprocating pumps are plunger pumps, diaphragm pumps. Plunger pumps consists of a cylinder with आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास एक ये पिस्टन है, ये कोई भी ये वॉल्व है, बेसिकली ये वन वे वॉल्व होते हैं। यहाँ से आपका फ्लो वाटर एंटर होता है और यहाँ से वो डिस्चार्ज, वॉल्व खुलता है तो पानी अंदर आता है, फिर ये पिस्टन से पुश करता है तो पानी बाहर चला जाता है। See how it works। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे वॉल्व खुल रहे हैं और कैसे पानी आगे मूव कर रहा है। It's very self-explanatory। So this is where यहाँ से आपका सेक्शन से पानी होता है, यहाँ से out होता है। So that's plunger is basically reciprocating। That's why we call it displacement pump। Again आप देख सकते हैं कि कैसे डायफ्राम जो है उससे आप वॉल्व खुल रहा है। Again, this is the entry point and this is the exit point of the wall। तो ये कुछ रेसिप्रोकेटिंग पंप था। देन उसके बाद हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं जिसके अंदर इम्पेलर होता है और मूव करता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जिससे सकिंग होती है और फिर उसको पंप करता है। इसके बारे में मैं पहले ही आपको जो है वो वीडियो दिखा चुका हूँ, तो उसकी जरूरत नहीं है सेंट्रीफ्यूगल पंप की।
रेसिप्रोकेटिंग जो पंप्स हैं इनके अंदर जब आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो फ्लो भी इंक्रीज होता है, उसी तरीके से हेड तो भी नहीं होता है, फ्लो की स्पीड तो लगेगी लेकिन वो उससे ज़्यादा कर पाएगा। लो स्पीड है और स्पीड वेरिएशन जो है इसका बहुत मुश्किल है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो जब आप इसका फ्लो चेंज करते हैं इसका हेड भी चेंज हो सकता है। स्पीड आप बढ़ाएंगे तो इसमें भी फ्लो बढ़ेगा लीनियरली, इस विद द स्केयर ऑफ द स्पीड होता है, तो हेड हेड जो है आपका not with linear relationships unlike reciprocating। इसी तरह जो स्पीड बढ़ाने से भी क्यूबिक रिलेशनशिप है इसका हॉर्स पावर का। सो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ लिटिल more you can say suited for manual pumps। Centrifugal pumps का ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, क्लोज क्लीयरेंस नहीं है, वॉल्व वाला मसला नहीं है, चौक हो जाते हैं, स्मॉल अमाउंट फ्लोर की नीडेड है। इसकी शुरू का भी ये क्या है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स एक इम्पेलर ही है तो इतना इसकी इजी मेंटेनेंस है, अनलाइक जो है वो अगर आप रेसिप्रोकेटिंग में डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसमें ऐसा कोई वाल्व वाला सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेसिव प्रेशर जनरेट नहीं होता, अनलाइक रेसिप्रोकेटिंग। सस्ता भी है ये रेसिप्रोकेटिंग के ऊपर। सो 15 सेक्शन जो लेफ्ट आएगा नाउ आपको बताया कि क्या है, वो 15 फीट है, स्मूथ है, नॉन पल्सेटिंग है। उसके अंदर जो रेसिप्रोकेटिंग है उसके अंदर पल्सेशन का भी प्रॉब्लम है क्योंकि पिस्टन जब आगे पीछे होता है तो आपका जो फ्लो है वो स्मूथ नहीं रुक रुक के होता है। इसमें कम मूविंग पार्ट्स हैं रेसिप्रोकेटिंग के नस्बत। So we always prefer machines quiet operation, स्लो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स नहीं है, हाई स्पीड पे ये चल सकता है एंड इट्स ईजियर फॉर इट क्योंकि इसके अंदर उस तरह से फ्रिक्शन नहीं है पिस्टन जैसे सरफेस के अगेंस्ट कर रहा था, इसमें ऐसा नहीं है तो इट्स रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन भी कम है इधर। सो ओवरऑल जो हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर मोर अट्रैक्टिव देन द रेसिप्रोकेटिंग पंप बट बोथ हैव फंक्शनैलिटी। अगर बॉटम लाइन पे जाएं इस लेक्चर माइंड रेंज को मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि माइन के अंदर पानी आने के बहुत रास्ते हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि वाटर टेबल है, सीपेज हो जाती है, वो डायरेक्ट माइन के मुंह से पानी बारिश का भी आ जाता है। इसके अलावा एक्वीफर को हम हिट कर देते हैं। एक्वीफर एक ऐसी रॉक होती है जिसके अंदर पानी स्टोर हो या कोई कैवर्न्स है जिसको हिट कर दें हम अंडरग्राउंड तो माइन में पानी आ जाता है। अब हमारा ये काम होता है क्योंकि माइनिंग के अंदर एक दफ़ा पानी आ जाए तो जब तक हम पानी को निकालेंगे नहीं हमारी माइन ऑपरेट नहीं कर सकती। तो पानी को निकालने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पंप्स हैं, दैट्स द ड्रेनेज मेन मैकेनिज्म। तो हमने ये देख लिया कि जो जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पंप है वो काम कैसे करते हैं, किस किस्म के पंप होते हैं माइनिंग में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी माइन की डिफरेंट लोकेशंस हैं उस पर किस किस्म का पंप होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंप सिलेक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ पर हमारा माइनिंग इंजीनियरिंग फंडामेंटल का जो कोर्स है वो ख़त्म होता है। अल्लाह ताला आप सब लोगों की ज़िंदगी को आसान करे, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में